All right. So the diagram shows this curve. We have this curve and we have some shaded region there. Curve की equation है y equals 8 sine half x and so on. And it's shown for x between 0 and pi. So x की domain is between 0 and pi. The x coordinate of the maximum point is alpha. So you've got this maximum point here of this curve. इसका जो x coordinate है, that is represented by alpha. And the shaded region is enclosed by the curve and the lines x equals alpha, so the vertical line, and the x-axis y equals 0. Curve or x-axis दरमियान में area. First of all, it says, show that alpha equals 2 pi over 3. How do we do that? We have to find the maximum point, right? X coordinate of the maximum point. Turning point पे gradient is 0. What does gradient represent? Gradient is represented by the derivative. So हम derivative find करेंगे, उसको equal to 0 input कर देंगे. So that's what we do. We have the first part here. We've got y equals 8 sine half x minus tan half x. Let's differentiate it. What do we get? We get 8. The derivative of sine is cos. So cos half x. And then we divide by what? Sorry, multiply by what? 1 over 2. So 1 over 2 se multiply kar denge. We can do that outside here or we can do that here. Minus derivative of tan is secant square. So secant square half x multiplied by 1 over 2. Okay, we put this equal to 0. Derivative equal to 0 input kar diya. We've got 4 cos half x minus 1 over 2 secant square half x. Looking at cos is being applied on this thing, right? This half x is inside cos. It's not a product. Cos इसके ऊपर apply हो रहा है वहाँ पे. So we can't really multiply them. Is that okay? What do we do now? We just solve this equation. इसको कैसे solve करेंगे? We can multiply the whole equation by 2 first, ताकि fractions खत्म हो जाए. That gives us 8 cos half x minus secant square half x. Okay. Now, how do we solve this equation? Remember, when we are solving trigonometric equations, the idea is we want only one type of function, only one type of ratio, and only one type of angle. We have only one type of angle already, half x hai, so that's not an issue. We want only one type of ratio. We've got secant and we've got cos. हमें सिर्फ एक चाहिए. क्या करें? Convert sin secant to cos. So secant क्या होता है? Secant is 1 over cos. We can convert that to 1 over cos and see what we get from that. We've got 0 equals 8 cos half x minus 1 over cos square half x. Is this okay? Now we multiply the whole equation by cos square half x. Cos square half x से multiply कर दें. What do we get from that? We have 8 cos cube half x minus 1. Now you can solve this. It becomes 8 cos cube half x equals 1. And then cos cube half x equals 1 over 8. You take cube root on both sides. It becomes cos half x equals 1 over 2. So we're taking a cube root here. Remember, when we take an odd root, we don't put plus minus. We only do that for even roots. Cube में आपको plus minus नहीं डालना होता. And that's what you have. Now, this is a trigonometric equation. Simple. You know कि x has to be between 0 and pi. आपके पास x नहीं है, आपके पास half x है. Half x की range क्या होगी? It's going to be between 0 and pi over 2. You just are going to be looking for angles between 0 and pi over 2. You find the basic angle from your calculator. Cos alpha equals 1 over 2. क्या आता है? Sorry?
pi over 3. So make sure that you're taking this in radians because we have range in radians there. So alpha equals pi over 3. Basic angle pi over 3 hai. You can only be in the first quadrant. 0 to pi over 2 range hai. You can't really be in any other quadrant apart from that. So you're just looking at this region. So you've got your value of alpha. आपको यही चाहिए था. उसने alpha ही कहा हुआ था उसको ऊपर भी. The value of alpha is pi over 3. Sorry, there's something wrong there. I'm sorry. So there's something wrong there. हमने alpha नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे. This should have been ऊपर उसने अल्फा कहा हुआ था ना, तो यहाँ पे बेसिक एंगल को कोई और नाम दे देते हैं, अदरवाइज वो कंफ्यूजन होगी वहाँ पे. Let's actually call this beta. So our basic angle is pi over 3, but now our angle was actually not x, it was half x. It was half x. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We'll have to say this is half x equals pi over 3, and x becomes 2 pi over 3, and that's actually a value of alpha. जो ऊपर हमने ये अल्फा उसने कहा हुआ था, this value is 2 pi over 3. Okay, second part. In the second part, you have to find the exact value of the area of the shaded region. Area of shaded region कैसे निकालते हैं? So it's the area between a curve and the x-axis. Curve and x-axis के दरमियान में area का formula हमारे पास क्या होता है? We have area between the curve and the y-axis, and the x-axis is y dx. ठीक है? What is y for us? 8 sine half x. 8 sine half x minus tan half x. We just need to integrate this function. What are the limits? Limits are from 0 to alpha. Alpha is 2 pi over 3. We just input those limits, integrate and input those limits. Let's do that. We've got 0 to 2 pi over 3. Okay? So we first have to integrate it. 8 sine half x का integral क्या आएगा? 8 stays as it is. 8 is just a constant. What is the integral of sine half x? Minus cos, right? So sine का integral is minus cos. So we start with that. We have minus cos half x, and then divide by 1 over 2. So 1 over 2 से divide करना है. ठीक है? Okay. Derivative of half x was 1 over 2. उससे हमने divide कर दिया. You can also do this here. आप यहाँ पे left side पे कर दें उसको. Half से divide करना था. यहाँ पे आपने कर दिया 1 over 2 से divide. Okay. What is the integral of tan now? Tan का integral क्या होता है? So we will have to convert it to sine over cos first. इसका direct integral नहीं होता. हमें क्या करना पड़ेगा? We write it as integral of sine half x divided by cos half x first. Okay? Tan का integral directly नहीं होता. You write it like this, but then what do you do after that? Yes, so we need the derivative of the denominator in the numerator, right? I'm going to do that here. I can say this is the derivative. Derivative of this thing is minus half sine of half x. How can we get that in the numerator there? We can say, let's just input minus 1 over 2 there. Under minus 1 over 2 डाल दें. But how do we balance that now? We do the same thing outside. So eventually it's going to be multiplied by 2. We can do that directly. Or a standard way of doing it in every single case would be just see से आप multiply कर रहे हो, उसी से आप divide कर दो. So outside what you're going to be doing is you're going to be dividing by minus 1 over 2. And that's easier to think of. And then you can simplify that. So whatever you're multiplying by inside, you divide by that thing outside. So we are multiplying by minus 1 over 2 inside. So we divide by minus 1 over 2 outside, and then you can simplify that afterwards. Is that okay?
It'll become 2, yes. So let me write that down again. So this is 16 or minus 16 cos half x, and we have plus 2 outside, and the thing inside now, it's exactly of that form that we needed. This becomes ln of cos half x then. All right? Any issues with this? Is this clear to everyone? And now we have to input limits. Limits are from 0 to 2 pi over 3. ठीक है? You can, if you want, you can do this directly on your calculator. But I would recommend आप इसको लिख लें एक दफ़ा, उसमें careless errors के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं. Okay, so what do we get? We have minus 16 cos of half into 2 pi over 3. Okay? Plus 2 ln of cos half into 2 pi over 3. And then we input 0. इसमें से माइनस कर देंगे. जब ये माइनस होएगा, it becomes, this whole thing becomes plus. So you got plus 16 cos of 0 minus 2 ln into cos of 0. That's what you're going to get when you input limits inside. Is that okay? If that confuses you, you can put a minus outside. You can say this is this whole thing. ये हमने 2 pi over 3 input किया है, उसमें से हम minus कर रहे हैं this thing like this. And that's the same thing. ये आपके पास आपने limits input कर दी. Now you will evaluate it step by step. So your first ये जो चीज़ है ये क्या आती है? Minus 16 into cos of pi over 3. What's that? Minus 8. This will be minus 8. The second thing, 2 into ln of this thing. Okay, so we need an exact value. इसने ऊपर कहा था, find the exact value of the area of the shaded region. We don't want decimals. If we have ln form, we just leave that as ln. So what is this? What is this thing inside? ये क्या है? Yes, we do. If that's an exact result, you do get an exact result for that, right? Cos of pi over 3. That will be 1 over 2, I think. Right? So that's 2 ln of 0.5 or 1 over 2. Is this correct? Then you've got 16 into cos of 0. Cos 0 is 1. You get plus 16 from there. ln of cos of 0. Cos of 0 is 1. Uska aap log loge, it becomes 0. And you've got 0 there. And your final result should look something like this. 8 plus 2 ln of 0.5. लेकिन ये मुझे एक बहुत कंप्यूट कर लेना. Cot x minus cot 2x, that is identical to cosecant 2x. ये हमें prove करना है. Let's start from the left hand side. Prove क्या करना है? Cosecant 2x चाहिए ना इनके ऊपर. Cosecant क्या होता है? It's 1 over sin 2x. Left side पे cot आ रहा है. हम सबसे पहले क्या करते हैं? Cot को convert कर लेते हैं sin और cos के अंदर. ठीक है? This becomes cos x over sin x minus cos 2x over sin 2x. अच्छा. अब राइट साइड पे हमें डबल एंगल ही चाहिए, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको सिंगल एंगल्स में, देखते हैं इससे क्या होता है. cos x over sin x, cos 2x को हम किस तरह लिख सकते हैं? We can say, let's say cos square x minus sin square x.
divided by 2 sin x cos x. Does this make sense until this point? सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई किया. Let's simplify this now. So देखते हैं क्या होता है. Again न्यूमरेटर में क्या आ गया? 2 sin x cos square x minus sin x cos square x minus sin cube x divided by 2 sin square x. Any problem with this? ये क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करें कुछ. न्यूमरेटर में हम साइन कॉमन ले सकते हैं. Let's do that. Sin x कॉमन ले लें. What are we left with? 2 cos square x minus cos square x plus sin square x divided by 2 sin square x cos x. अब क्या होगा? sin x कैंसिल हो गए. What are we left with? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखें क्या आ गया? 2 sin x cos x आ गया डिनोमिनेटर. 2 sin x cos x. Is that familiar? वो क्या होता है? sin 2x. हमें प्रूफ क्या करना है? यही प्रूफ करना है डिनोमिनेटर में sin 2x आना चाहिए. न्यूमरेटर में किसी तरह से 1 लेकर आना है. अब देखते हैं न्यूमरेटर में क्या हो रहा है हमारे पास. 2 cos square x minus cos square x, ये क्या हो गया? cos square x plus sin square x cosecant 2x. अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट देख लें. पहले उसने कहा है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. I'm doing this part first. Integral of cosecant 2x dx, और इस पर लिमिट्स लगाई हुई हैं. pi over 6 to pi over 4. ये आपकी लिमिट्स हैं. ये आपको इंटीग्रेट करना है. You want the exact value of this? You want the exact value of this? And your answer should be in this form. A, L, and B इस form में आपका final answer होना चाहिए. Okay? Now, how do we integrate cosecant 2x? Cosecant 2x को integrate करने का, इसको sin में convert कर दें. अच्छा, अगर हम 1 over sin 2x करते हैं इसको, what do we do after that? इसको इंटीग्रेट करने का कोई तरीका नहीं आता. तो मैंने बता दिया था ना. So we can't do it like this, right? 1 over sin 2x करके we can't go any further. इसको क्या करें इसके बाद? Okay, 2 sin x cos x, फिर क्या करें? कौन सी दूसरी फॉर्म? या सो बेसिकली यहाँ पे देखें मसला क्या है. उसने ना आपको अगर उस लिख देते ना hence find this, उससे आपको क्लियर हो जाता है कि अच्छा आपको किसका पार्ट यूज करना है. उसने यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया. तो यू हैव टू बी एबल टू फिगर आउट कि अच्छा ये डायरेक्टली तो सभी मेथड ही नजर आ रहा है हमें, लेकिन क्या हमने कुछ पहले पार्ट में कुछ ऐसा किया है दैट वी कैन यूज इट. इन द वेरी फर्स्ट पार्ट वी प्रूव्ड दिस आइडेंटिटी. इस क्वेश्चन मसला ये भी है कि इसके बाद आप सेकंड पार्ट कर रहे होगे. सेकंड पार्ट करने के बाद आप भूल चुके होगे आपने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, और इसलिए आपको यहाँ पे हो सकता है आपको ध्यान में ना आए कि आपने क्या करना था. तो अगर आपको नहीं कुछ समझ आया, लुक एट द फर्स्ट पार्ट्स, लुक एट द अर्लियर पार्ट्स. उसमें कोई ऐसी चीज है जो आप यूज कर सकते हैं. यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव किया है कि cosecant 2x is the same thing as this. Cosecant 2x is the same thing as this. आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. All right. So rather than integrating cosecant 2x, you say let's integrate cot x
माइनस cot 2x, ये इंटीग्रेट करना, ये इंटीग्रेट करना, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट में उसने आपसे एक्चुअली cot x भी इंटीग्रेट करा लिया, तो आपको यहाँ पे आइडिया होगा पहले ही cot x कैसे इंटीग्रेट करते हैं। क्या करेंगे, cot को हम cos over sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। You can say this is cos x over sin x, and this is cos 2x over sin 2x, ठीक है। Does this make sense? इसमें क्या मसला है किसी को? cot x और cot 2x को इंटीग्रेट करना है। cot x के डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। tan के लिए हम क्या करते थे, sin over cos करते थे। cot के लिए भी वही करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos over sin हो गया। And now we know the derivative of sin is cos, that becomes ln of sin x। अच्छा, cos 2x over sin 2x, इसको कैसे इंटीग्रेट करें? sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin 2x का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x, और जो अंदर वाला पार्ट है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, it becomes 2 cos 2x, right? So what do we need then? We need 2 in the numerator there. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, so this is 2 here, और बाहर आप 2 से डिवाइड कर दें, all right? And now this becomes ln of sin x minus 1 over 2 ln of sin 2x. And now you can input the limits. Limits were from pi over 6 to pi over 4. ये limits input कर दें और देखना आपको exact value चाहिए, ये सारे steps आपको show करने पड़ेंगे, आप वो देखते हैं। अच्छा, so what do we get here? pi over 4 input करते हैं, वर्किंग शो करनी पड़ेगी। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, इसके मार्क्स कटेंगे आपके, अदरवाइज वर्किंग नहीं शो करेंगे। यस, कर सकते। अच्छा, ln of sin power 4 minus 1 over 2 ln of sin 2 pi over 4। ये आपने pi over 4 input कर दिया। Subtract from this the case when you input ln pi, when you input pi over 6, that gives you ln of sin pi over 6 minus 1 over 2 ln of sin 2 pi over 6. Again, you cannot evaluate this whole thing directly from the calculator. You want an exact answer, working show करनी पड़ेगी। sin pi over 4 की वैल्यू इनपुट करके दिखानी है। यहाँ पे क्या वैल्यू होती है? sin pi over 4 is 1 over square root of 2। ये होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ 2 over 2, एक ही बात है। कैलकुलेटर पे आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 over 2, राइट? दैट्स व्हाट यू गेट ऑन योर कैलकुलेटर। ओके, minus 1 over 2 ln of sin pi over 2. What's that? Sin pi over 2 is 1. ये इनपुट करके दिखाना है। Minus ln of sin pi over 6. Sin pi over 6 is 1 over 2 plus 1 over 2 ln of sin pi over 3. What's that? Square root of 3 over 2. इसका एक तरीका होता है याद रखने का, बट आप कैलकुलेट पे कर लें। ठीक है, वैल्यूज इनपुट कर दिए सारी। अब क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। दिस थिंग बिकम 0, ये 0 हो गया। What do we have now?
ln स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, ये तो 0 हो गया, इसको वैसे आप 0 लिखना चाहे लिखते हैं, ln of 1/2 प्लस ln of this thing. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब भी आपको मल्टीपल लॉग टर्म्स को एक सिंगल लॉग टर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हो, ये जो 7 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, इनको आप पावर में ले जाते हो. दैट्स ऑलवेज व्हाट यू डू. मेक सेंस? जो साइड मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं जो नंबर्स, उनको आप पावर्स में ले जाते हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन टेक दिस 1/2 टू द पावर देयर. उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल लगा सकते हैं लॉग्स का, अदरवाइज नहीं लगा सकते. अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम डिवीजन लॉ या मल्टीप्लिकेशन लॉ नहीं यूज कर सकते. So that's why you will see this in all integration problems जहाँ पे logs आ रहे होते हैं, उसके एंड पे आपसे सिंगल log term आ रही होती है, मल्टीपल log terms नहीं आ सकते. सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, हमेशा जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे उनको आपने पावर्स में ले जाना है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लॉ या डिवीजन लॉ लगा देना. ओके, all right, let's see what we get from this. ln of square root of 3/2 whole raised to power 1/2, ये आ गया. Let's use the log rule now. ln of square root of 2/2, ये फर्स्ट आपके पास नंबर है, ये माइनस हो रहा है, गॉट दिस माइनस हियर, ये 1/2 से डिवाइड हो जाएगा. ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 के साथ. Any problems until this point? Any problems until this point? लॉग रूल अप्लाई कर दिया, ये माइनस हो रहा था, ये डिनोमिनेटर में चला गया, ये प्लस हो रहा था, ये यहाँ पे आके पूरा ये मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, जब लॉग के बाहर एडिशन हो रही होती है, लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, जब लॉग के बाहर सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, लॉग के अंदर डिवीजन हो जाती है. राइट, वो रूल यूज किया. एंड नाउ वी ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू, अच्छा ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली 3 raised to power 1/4, तो पावर में लिखते हैं इस तरह से, 2 raised to power 1/2 हो गया, और यहाँ पे आ गया 2 raised to power 1/2. इसको वैसे भी रहने दे सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको वैसे लिखते हैं, वो भी सही है. ये कैंसिल हो गया, व्हाट डू वी गेट, ln 3 raised to power 1/4 ये आ गया. उसने क्या कहा था हमें, उसने कहा था a ln b, ये फॉर्म चाहिए, पावर है उसको हम बाहर लग सकते हैं 1/4 ln 3. Okay, question number 19. So what do we have in the first part? Partial fractions आप लोग कर सकते हैं, right? A, B, C, D की values निकालनी है. What do we get for that? A is 1, so that's 1 plus B, 1 plus 2/x, 1 again, 1/x square, minus 3/2x minus 1. We have to show this thing, that the integral of this expression, जिसके हमने partial fractions निकाले हैं, with limits 1 and 2, they evaluate to this thing. Isn't that quite straightforward? No? Okay. चलें, let's write that down. So part 1 आपने कर लिया, part 2 में आपको क्या करना है, you have to input these limits. We have to integrate it first, 1 plus 2/x plus 1/x square minus 3/2x minus 1. We integrate every term separately, अलग-अलग से integrate कर लेते हैं. What is the integral of 1?
I'm going to write it like this first. So let's write down each term separately. Okay, आपको confusion नहीं हो. We've got 1 dx plus integral of 2 over x dx plus 1 over x square integral minus integral of 3 over 2x minus 1. Let's first integrate. Limits बाद में देखेंगे फिर उसको. Okay, what is the integral of 1? X. 2 over x. If we take 2 outside, what do we have inside? 1 over x. 1 over x का integral क्या होता है? 1 over x का integral क्या होएगा? ln x. Right, x का derivative numerator में है 1, so that's ln of x. What do we do with this? Is it tan inverse form? Is it tan inverse form? Why can't we use tan inverse there? वो भी तो ये होता था 1 over x square plus a square. Yeah, we can say this is x square plus 0 square, right? Why not? Try सकते हैं ना? What's the problem there? क्या होएगा? So remember 1 over, yes? 1 over 8 है ना? So 1 over x squared, yes, Aman? It has to be non-zero. The reason for that is, इसका integral क्या होता है? इसका integral is 1 over a into tan inverse of x over a. If a is 0, we will get 0 in the denominator, and that's not going to work. Because so tan inverse is not going to work for this reason. So what else can we do? This is normal integration. आप x को ऊपर लेके जा सकते हो. This is x raised to power minus 2 dx. Right? 3 over 2x minus 1. How do we deal with this? इसका standard तरीका 2x minus 1 का derivative क्या होगा 2. We need 2 in the numerator. ठीक है? Whatever is the number that you have in the numerator, you take that outside. You put 2 inside. 2 आपने जो अंदर input किया उससे आप बाहर divide भी कर दो. And that's your log form now. Okay? Is that okay? And now we can integrate it. It becomes x plus 2 ln of x. So it becomes x plus 2 ln x. What is the integral of this? This is x raised to power minus 1 divided by minus 1 minus 3 over 2 into log of 2x minus 1. And plus some constant. Yeah, sorry, constant nahi dalna. This is definite integral. We have x plus 2 ln x minus 1 over x minus 3 over 2 into ln of 2x minus 1. We just need to input limits now. Limits were from 1 to 2. Sub integrate कर लिया, उसमें अब आपने ये limits डाल देनी है. Any issues with this? Is this okay to everyone? Let's input the limits. 2 डालते पहले, then we input 1 after that. So 2 into 2 plus 2 ln of 2 minus 1 over 2 minus 3 over 2 into ln of 2 into 2 minus 1. That's going to be 3 minus, let me just write that down, 2 into 2 minus 1. We subtract from that 1 plus 2 ln 1 minus 1 over 1 minus 3 over 2 into ln of 2 minus 1. We simplify this. We have 2 and minus 1 over 2 here. That's 3 over 2 plus 2 ln 2 minus 3 over 2 into ln of 3. Here we have minus 1 and minus 1, so वो cancel हो जाएंगे. 2 ln 1 ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. So this whole thing becomes 0 basically. यहाँ पे आपका पूरा 0 हो जाएगा. Right, the second thing, because this is 1, this is minus 1, they get cancelled. This is ln 1, ये 0 है, ये भी ln 1 है, ये भी 0 है. Everything gets eliminated there. Okay? बाकी सब कुछ आप simplify कर लो.
what did we need there? 3/2 plus half into ln of 16/27. That's what we need to show. 3/2 तो हमारे पास आ गया साइड पे. We need only one ln term there. Single ln term चाहिए. इसको combine करना पड़ेगा किसी तरह से. We also have half outside. We can take half common. So you can think of it this way. It's going to be very quick. अगर आप यहाँ से half common ले लें बाहर. Can we do that? क्या हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए half ln of 16/27. So we can take 1/2 common ताकि वो बाहर रहे, फिर बाकी पे log का कोई rule apply कर देंगे. So we can say this is half. अगर half common लेंगे, we have 4 ln 2 minus 3 ln of 3. Does this step make sense to everyone? मैंने multiply किसी चीज को भी नहीं किया. It's not an equation, it's an expression. Multiply divide नहीं कर सकते. I've taken 1/2 common from these two terms. Why have I done that? Because मैंने देखा मुझे चाहिए क्या था इनके ऊपर. I needed half into ln of something. So that's why I'm taking ln common, 1/2 common outside there. Is that okay? You could do it at a later step as well, but that will require a few more steps then. अब यहाँ पे बहुत simplify हो जाएगा. अब अपने log rule apply करना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा अंदर? This is ln of 2 raised to power 4. 4 का power में ले गए. Minus ln of 3 raised to power 3. And then you can apply the log rule again. So it becomes 3/2 plus half into ln of 16/27. That's what we needed to show there. Okay, so first of all, we have to show that x plus 1 is a factor of this thing. That's a polynomials question. X plus 1 को factor show करना, how do you do that? -1 input कर देंगे, right? Factor theorem. So result क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, because factor के case के अंदर remainder 0 होता है. So what you do is, whatever is the linear factor, you put that equal to 0. And that gives you x equals -1. उस polynomial के अंदर आप क्या करोगे? 0 input, -1 input कर दोगे. So you get 4 into -1 का cube, minus -1 squared, minus 11 into -1, -6, and you see what you get from that. -4, -1, -5, -5 plus 11, and that. So that's going to be 0. So remainder is equal to 0. That implies that x plus 1 is a factor. Acha, second part, find the integral of this thing. And that looks fairly complicated. It's a fraction, right? Sorry? Ye kya hai? Acha. So it's an 8-mark question, so it's going to require some working. Yes. (4x squared plus 9x minus 1 divided by 4x cubed minus x squared minus 11x minus 6. Okay, so we want to integrate this thing, right? We are going to look at it in a structured way. What's the first thing that you think about when you have a fraction? Do you have the derivative of the denominator and the numerator? Can we make it such? Let's think about that. 12x squared minus 2x minus 11. इसका ये उसका constant multiple बन सकता है किसी तरह से? नहीं बन सकता. It's not possible. ठीक है? So this doesn't work. It's very clear. Tan inverse वाली form तो नहीं है ये. वो भी नहीं लग सकता. Yeah, 8 mark देख के बात चलता है. Yes. So the third option is partial fractions. अब partial fractions कैसे करेंगे? उसके लिए factors करने पड़ेंगे. ठीक है? So you have one factor given. X plus 1, you have to find the other factors. Again, this is the polynomials part first. आपको factorization करनी है using long division or synthetic division, whatever you prefer. That's what you start from. हमारे पास ये polynomial था 4x cubed minus x squared minus 11x minus 6. You want to divide it by
x plus 1. वो भी कर सकते हैं, so आप coefficients compare कर सकते हैं if you want. You can use long division, you can use synthetic division, whatever you prefer. All of them are going to work here. Synthetic division is going to be quickest in this case. आप क्या करते हो? 4 minus 1 minus 11 and minus 6. You write them in a form like this. X plus 1 को equal to 0 input करें, minus 1 आता है, you put minus 1 here. Now 4 comes down as it is. Minus 1 into 4, that's minus 4. इनको add किया, minus 5 आ गया. Minus 1 into minus 5, that's 5. We get minus 6 from here. Minus 1 to minus 6 is 6. We get 0, and that's your remainder. Remainder 0 आ गया, ठीक है? So that confirms that your working is correct. It was a factor. Remainder 0 होना चाहिए था. यहाँ से हमें मिल गया. This is the constant. Last term constant होती है. As we go to the left side, this is x raised to power 1, this is x raised to power 2. हमारा जो दूसरा factor आ गया, that is 4x square minus 5x minus 6. ये हमारा दूसरा factor आ गया. Now we've got two factors. One is x plus 1. Yes, so that's what we think about now. We've got x plus 1 into 4x square minus 5x minus 6. And now we think, can we factorize this further? So are the online people still connected? Yes, sir. Okay. X plus 1 into 4x square minus 5x minus 6. We see whether further factorization is possible. 4 into 6 is 24. So minus करके कैसे आ सकता है 24? 8 and 3. So let's use that. X plus 1 into 4x square minus 8x plus 3x minus 6. इसको factorize कर लें. We get 4x outside, x minus 2 plus 3 into x minus 2. And now the three factors are x plus 1, 4x plus 3, and x minus 2. Okay? So this is your factorization. Now, once you're done with that, अब आप क्या करोगे? इसके partial fractions करोगे. जो ऊपर आपके पास fraction थी, उसके partial fractions करने हैं. And then you can see if you can apply one of those forms that you discussed. इस पे log लग जाएगा फिर बाद में. But let's find the partial fractions. The partial fractions हमारे पास वो क्या थी expression? 4x square plus 9x minus 1. 4x square plus 9x minus 1. The three factors that we have now are x plus 1, 4x plus 3, and x minus 2. ठीक है? इसकी form क्या बनेगी? A over x plus 1 plus b over 4x plus 3 plus c over x minus 2. We get a into 4x plus 3 into x minus 2 plus b into x plus 1 into x minus 2 plus c into x plus 1 into 4x plus 3. Okay, on the other side, we've got 4x square plus 9x minus 1. अब इसमें आप values input कर दें one by one. So first you input x equals 2. X equals 2 input करते हैं. So देखते हैं क्या होता है. On the left side, what do we get? So लिख लेते हैं 4 into 2 square plus 9 into 2 minus 1 equals 0 plus 0 plus c into 2 plus 1 into 4 into 2 plus 3. ठीक है? Left पे क्या आता है? Sorry? 33. On the right side, 3 into 11, 33. So 33c, c is equal to 1. X की कोई और value input कर दें. Minus 1. उस पे क्या मिलता है हमें? 4 into minus 1 का square plus 9 into minus 1 minus 1. That is equal to a into 4 into minus 1 plus 3 into minus 1 minus 2, and the other factors become 0. यहाँ पे क्या आता है left पे? Minus 6 equals 3a
and a equals -2. ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई. Then we put another value of x -3/4. उससे क्या मिलता है हमें? We get 4 into -3/4 whole squared plus 9 into -3/4 minus 1, that equals 0 plus b into -3/4 plus 1 into -3/4 minus 2 plus 0. ठीक है, now we simplify this. What do we get? Left पे -5.5, that equals -11 over. That's the value of. अच्छा, क्या क्या आ रहा है वहां पे? -11/16 b. Okay, so b की वैल्यू क्या आ जाती है? b is 8. Okay, so that's the value of b. We've got a, b and c now. अब हमारा जो है वो फ्रैक्शन क्या बन गया? इंटीग्रल हमारे पास क्या हो गया? जो हमने ओरिजिनल इंटीग्रल रखा हुआ था, which was 4x square plus 9x minus 1, 4x square plus 9x minus 1 divided by that polynomial 4x cube minus x square minus 11x minus 6. वो इंटीग्रल हमने सिंप्लीफाई करके इस तरह कर लिया. It's the integral of a is -2 over the first factor x plus 1 plus b, which is 8 over the second factor 4x plus 3 plus c, which is 1 over the third factor, which is x minus 2. ये हमारे पास उसके partial fractions आ गए. इसको integrate करना है. Is this clear to everyone? Any problems with this? ये तो partial fractions था. यहाँ तक हमने कुछ भी integration नहीं किया. ठीक है, हमने partial fractions कर ली. Once we are done with partial fractions, now we have to think about what rules we can use. अच्छा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? First fraction के अंदर you need 1 in the denominator, 1 in the numerator, 1 derivative है, 1 चाहिए आपको ऊपर. So -2 को बाहर लिख लेते हैं और इसको अलग अलग लिख लेते हैं. In fact, पहला इंटीग्रल क्या होएगा? -2 बाहर लिख दिया. Inside we got 1 over x plus 1 dx. अच्छा, 4x plus 3 का डेरिवेटिव 4 होगा. इसमें भी सर 2 बाहर ले लेते हैं. 2 बाहर ले लेते हैं. You can think of it like that. 2 बाहर ले लें because अंदर 4 रह जाएगा. और another idea that would work in every single case, अगर कुछ fractions भी आ रही हो, this is what will work every single time. आप जो भी ऊपर नंबर है उसको बाहर लिख लो. जो भी ऊपर नंबर है उसको बाहर लिख लो. And then inside you put the derivative of the denominator. So the derivative of denominator क्या होगा? 4. 4 से multiply भी कर दिया, 4 से divide भी कर दिया. Right? यहाँ पे तो आपको clearly नजर आ रहा है कि अच्छा 2 था, 2 को बाहर लिख सकते हो. बट कभी कभी आपको इतना क्लियरली नहीं नजर आ रहा होगा. उसके लिए आपने क्या करना है? कांस्टेंट को बाहर लिख दिया एंड देन इनसाइड यू मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव और बाहर आपने डिवाइड कर दिया डेरिवेटिव. ठीक है, सो दैट फ्रैक्शंस में भी आपके लिए सोचना आसान होगा उस तरह से. यस, ओके. अच्छा, चलें, लेट्स लुक एट दिस. हम क्या कह रहे थे? या सो हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चाहिए. ठीक है, 4x plus 3 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चाहिए. वन वे टू थिंक ऑफ दैट इज वी टेक 8 आउटसाइड एंड इनसाइड यू गॉट 4 एंड 4x plus 3. लेकिन 4 अंदर डाला है तो उसकी वजह से हमें 4 को 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. राइट? अच्छा, लास्ट टर्म उसमें तो ऑलरेडी 1 हमारे पास है न्यूमरेटर के अंदर. सो दैट्स 1 over x minus 2. इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे. अब तीनों में लॉग फॉर्म आ गई. What do we get? We get -2 log of x plus 1 plus 2
into log of 4x plus 3 plus log of x minus 2 plus c. ठीक है? That's what we get. That's the integration. देखिए मुश्किल तो कुछ नहीं था. It required some working. लेकिन आपने वो partial fractions find की, उसमें उसके बाद log form लगा दी, and that's it. This is from the most recent paper, March 2022. So then there's another type of question that they've recently started giving in paper 3. I've only seen 2 of them. This is one of them from March 2022. Now, what are you asked in the first part? You have to find the quotient and remainder when this thing is divided by 4x squared plus 1. You have to find it. Okay. Now this is polynomials. ये तो आपको पता है. इस तरह करते हैं. Simple division करनी है. How do we do this? We can use long division. Synthetic division आप use कर सकते हैं? नहीं कर सकते. उसके लिए आपको आपके पास जो divisor है वो linear होना चाहिए. So that doesn't work. Okay. So you either use long division or you use the comparing coefficients wala method if you've done that. But long division works every time, so I'm going to do it that way. 8x cubed plus 4x squared plus 2x plus 7. This is what we have. Now this is divided by 4x squared plus 1. 4x squared वैसे multiply करेंगे पहले 2x के साथ. We get 8x cubed plus 2x. Now there's no x squared term here. आप दरम्यान में space छोड़ देंगे. I'll say this is 2x here. If you want, you can write 0x squared. That's also fine. तो आप लिख सकते हैं. Now you subtract this thing from what you have above. This gets cancelled, and we get 4x squared plus 0x plus 7. What do you multiply by now? Plus 1. Plus 1 से multiply करेंगे हमें क्या मिलेगा? 4x squared plus 1. You've got 0x in the middle. We change the signs. This gets cancelled. We're left with 6. That's our remainder. Can we go any further than this? This is all we have. That's all what we have. Can somebody verify this? Yes. Now they've asked us for the quotient and the remainder. This is the quotient. And this is the remainder. This is what we did. Now, in the second part, it says, hence find the exact value of this expression. Hence find the exact value of this. Hence ka matlab, you have to use the earlier part somehow. How is that related? आपके पास भी जो dividend था ऊपर, that's coming here. और जो divisor था, that is coming in the denominator. तो basically वही division जो ऊपर हमने किया है, वो इस तरह उसने fraction form में लिख दिया, right? So now we need a way to break this fraction down into its parts using this rule that we know of. मैंने आपको example दिखाई थी. Let me just repeat that today. I'll just use the same numbers. क्या हमने क्या use किया थे? 8 था. Okay. 8 divided by 5. Let's say you got this. You want to divide 8 by 5. How do you do that? 5 times 1 gives you 5, and that gives you a remainder. That is 3. So what were you actually doing here? You were doing 8 over 5. इसको आप break down करके कैसे लिख सकते हो? 1, that is the quotient. You write that here. Plus the remainder, that's 3 divided by 5.
राइट? हम 8 over 5 को इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं. रिमेंबर ग्रेड 6 7 में आई थिंक आप लोग करते होते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उसको किस तरह से आप मिक्स्ड फॉर्म में लिखते थे. इसकी मिक्स्ड फॉर्म बेसिकली क्या होगी, 1 whole 3 over 5. उसमें बस प्लस लगा दिया दरम्यान में. That's what you have. 1 plus 3 over 5. Right? Now this is actually a general rule that we have. That if we have a dividend, ये हमने polynomials में भी किया था, if you remember, dividend over the divisor, that is equal to, ये देखिए 8 was dividend, 5 was the divisor. Dividend over divisor is equal to 1, what's that? That's the quotient. Plus 3, that's the remainder, divided by the divisor. तो आप इस तरह के फ्रैक्शन को, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं. Is that okay? Now this is something that you have to remember. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ये आपको याद होना चाहिए. हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने इंटीग्रेशन करनी थी सेकंड पार्ट के अंदर, before we think of the integration, in fact let's think of the integration first. आप उसने आपसे ये इंटीग्रेट करने का कहा है. अब जो नॉर्मल रूल्स हैं हमें जो पता है अभी तक, लॉग रूल, डज दैट अप्लाई हियर? डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ सकता है हमारे पास. यहाँ पे 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 8x. We can't have that, right? Tan inverse वाला रूल कांस्टेंट नहीं है न्यूमरेटर में. that's not going to work as well. थर्ड ऑप्शन क्या होती है? पार्शियल फ्रैक्शंस. डज दैट वर्क? फैक्टराइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को किसी तरह से. 4x स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज करने का कोई तरीका नहीं, राइट? तीनों मेथड्स नहीं अप्लाई हो रहे यहाँ पे. Now this is another possibility that you have now, that you break it down into different parts using this relationship here. ये यूज करके आप इसको ब्रेक कर लें पार्ट्स में, इसके कोशेंट और रिमाइंडर ओवर डिवाइजर वाले पार्ट्स में ब्रेक कर लें इसको. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ. आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू दीस टू पार्ट्स. सो इट बिकम्स कोशेंट. कोशेंट क्या था? 2x plus 1 plus remainder, that is 6, divided by the divisor, which was 4x square plus 1. तो इस फ्रैक्शन को मैंने ब्रेक कर लिया इन पार्ट्स के अंदर. सच में उसको ब्रेक कर लिया. And now I can integrate these parts individually. 2x plus 1 को अलग से इंटीग्रेट कर सकता हूँ. 6 over 4x square plus 1 को अलग से इंटीग्रेट कर सकता हूँ. Make sense? So this is another possibility that we have. As I said, ये आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ फर्स्ट पेपर्स के अंदर. और जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो स्टूडेंट्स को खुद से सोचना पड़ा होगा उसके अंदर क्या करना है, राइट? बट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू डू नॉट नो अबाउट. हमने पॉलिनोमियल्स के लेवल के अंदर वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है. डिवीजन करते हैं तो क्या किस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं उसको इन पार्ट्स के अंदर. ये तो हमने पॉलिनोमियल्स में कवर किया हुआ है एग्जैक्टली इस तरह से. वो कहीं पे यूज नहीं होता था पहले इतना, लेकिन अब वो यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट? और फर्स्ट पार्ट में उसने वो डिवीजन करवाई है आपसे, वहां से भी हिंट मिल रही है आपको कि कोशेंट और रिमाइंडर उसने वो क्यों निकलवाया है. सेकंड पार्ट में वो यूज हो रहे हैं. तो ये आपको खुद सोचना था उसके अंदर इफ यू वर सेटिंग फॉर दैट एग्जाम. तो कभी-कभी इस तरह से कोई नई चीजें आ जाती हैं दैट यू हैव टू फिगर आउट ऑन योर ओन इन दैट एग्जाम. और हर सेशन में कोई ना कोई एक चीज या दो चीजें ऐसी होती हैं किसी पेपर में आती हैं इस तरह से. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सारे, फिर आप फिगर आउट कर सकोगे उस पॉइंट के ऊपर. Does this make sense to everyone? Now let's do this integration. 8x cubed plus 4x square plus 2x plus 7 divided by 4x square plus 1. ये हमें इंटीग्रेट करना था. हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं. हम कहते हैं let's integrate 2x plus 1 separately and let's integrate 6 over
4x square plus 1 सेपरेट, ये अलग से इंटीग्रेट कर, ठीक है। अच्छा इसमें लिमिट्स भी हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है और लिमिट्स के साथ अभी हम इग्नोर करें, अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद एंड पे लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ वी आर जस्ट इंटीग्रेटिंग दिस, एंड पे जाकर लिमिट्स डाल देंगे। लिमिट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या थी, दे वर फ्रॉम 0 to 1/2, 0 to 1/2। अभी के लिए लेट्स जस्ट इंटीग्रेट इट लाइक दिस, 2x plus 1 का इंटीग्रल, व्हाट्स दैट, 2x का इंटीग्रल इज x squared, so it's 2x squared over 2, right? So 2 and 2 get cancelled. What about the integral of 1? That is x. ये तो हमने इंटीग्रेट कर लिया इसको। Now we again have a fraction. Okay. Again, let's think of it step by step. Log rule apply होता है? नहीं होता। 4x square का derivative क्या है? 8x. We can't have 8x in the numerator. That doesn't work. Tan inverse. Constant in the numerator. Constant है. Denominator में we need. Denominator में हमें चाहिए x square plus a square. ये चाहिए। इसका जो इंटेग्रल होता है वो क्या होता है? It's 1 over a into tan inverse of x over a. ये इसका इंटीग्रल होता है। इस फॉर्म के लिए कंडीशन क्या होती थी? The coefficient of x square has to be 1. कुछ और फॉर्म्स होती हैं ऐसी जिसमें आप इसको इसके बगैर कर सकते हो, वो आपको याद करनी पड़ेंगी अगर आप वो करना चाहो। We'll discuss that then when we come back from the exams जून में इंशाल्लाह। वो ऑप्शनल है, you don't have to know them। अभी हम वो वाला मेथड यूज कर रहे हैं जो फॉर्मूला शीट में दिया होता है। फॉर्मूला शीट में जो फॉर्मूला दिया होता है उसको यूज करके अगर आप करते हो तो आपके पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। It has to be 1. Yes. So we have to take 4 कॉमन आउटसाइड। नीचे जो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है उसको बाहर कॉमन लिखना पड़ेगा। अच्छा न्यूमरेटर से भी 6 बाहर लिख लेते हैं बिकॉज़ उधर हमें 1 चाहिए था, although it's not necessary but that's okay। 4 को बाहर लिख दिया। What do we have inside now? 1 over x square plus 1 over 4 dx. Denominator में से हमने 4 कॉमन ले लिया। Denominator में से 4 कॉमन ले लिया। Any problems? Clear है? Okay. Now we need x square plus a square. दूसरा constant भी आपका square होना चाहिए। Yes, so we can write that as 1 over x square plus 1 over 2 whole square. Now if you compare it with that form, a की जगह पे क्या आ रहा है? 1 over 2 आ रहा है। a की जगह पे 1 over 2 आ रहा है, तो a की वैल्यू 1 over 2 है। इसकी इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगी? 1 over x square plus half square, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 over a, 1 over a is 1 over 2 into tan inverse of x over a, which is x over 1 over 2। पहले तो हमारे पास वही आ रहा है x square plus x, that remains as it is। This is your integral। Now we have to input the limits, but before that it's better to simplify this। आपकी working थोड़ी सी आसान हो जाएगी, आपकी calculation आसान हो जाएगी। Let's simplify। Outside we still have x square plus x। Now you've got this 2 in the denominator and this 1 over 2 in the denominator. They can get cancelled out. So this 2 and this 1 over 2 they get cancelled। Is that okay? ये तो नीचे 2 है, इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। 1 over 2 जो denominator में है, I can take that to the numerator, and that gives me 3 tan inverse of 2x। Now we can input the limits। लिमिट्स क्या थी? 0 से लेकर 1 over 2 तक वो लिमिट्स इनपुट कर दें। इसने कहा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। Whenever you need exact value,
एक तो आप डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते और दूसरा आपको वर्किंग पूरी शो करनी पड़ती है, सारे स्टेप्स शो करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से सीधे आंसर्स नहीं लिखते हैं, सारे स्टेप्स शो करना है। Let's input the limits. X square के अंदर 1/2 input करते हैं पहले. We have 1/2 whole squared plus 1/2 plus 3 into tan inverse of 2 times 1/2, that is 1. Subtract from this 0 plus 0 plus 3 into tan inverse of 0. ये tan inverse of 0 को आपने सीधा 0 नहीं लिखना, ये आपने पहले लिखना है tan inverse of 0. ये 0 स्किप कर सकते हो if you want, लेकिन tan inverse of 0 पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो उसको स्किप नहीं करना. Let's evaluate this now. 1/2 whole square, that is 1/4 plus 1/2. Again, tan inverse of 1 की वैल्यू इनपुट करके दिखानी है आपने, सीधा evaluate नहीं करें कैलकुलेटर से. tan inverse of 1 पहले evaluate करें. What's that? That is pi/4. रेडियंस यूज करेंगे, डिग्रीज यूज करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आपने डिग्रीज नहीं यूज करने पेपर 3 में कहीं पे भी. वेक्टर्स में अभी हमने कवर नहीं किया, वो ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स के अलावा आप कहीं पे डिग्रीज यूज नहीं करते पेपर 3 में, ठीक है. हाँ, उनके आंसर सही नहीं आएगा इससे. डिग्रीज को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते इसका, बिकॉज़ डिग्रीज इज अ सेपरेट यूनिट. रेडियन इज यूनिटलेस, तो रेडियन आप कर सकते हो किसी के साथ, वो मसला होता है. अच्छा, 0 0 3 tan inverse of 0 वो क्या होता है? tan inverse of 0 क्या होता है? वो भी 0 होता है. तो आपने इनपुट करना है 0 वहां पे. दिस इज व्हाट यू हैव, एंड नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस. 1/4 plus 1/2 क्या होएगा? 3/4, and you have 3 pi/4. This is the exact value that you're looking for. Okay, so we have to show this thing कि इसका integral जो है with limits 0 and 1, that is 4e raised to power minus 1/2 minus 2. So how do we integrate it? 1 minus x into e raised to power minus half x. Let's integrate it first. उसको पहले integration कर लेते हैं, उसके बाद we input limits. So we can write it as e raised to power minus half x minus x e raised to power minus half x, right? इसको multiply कर लें अगर, it breaks down into two different expressions. It's not necessary, आप उसको इकट्ठा एक साथ भी कर सकते हो, that's fine as well. But if you, sorry, could you please say that again? Zoom it in. Okay. Is this better? Okay. So we have two integrals here, e raised to power minus half x and x e raised to power minus half x. E raised to power minus half x is pretty straightforward. That's going to be e raised to power minus half x as it is divided by minus 1/2. Okay, so that's the first thing. What about the second expression? It's a product. We will have to use integration by parts there. So how do we choose which one of them is going to be u and which one of them is going to be dv over dx? X is algebraic, e is exponential. In IL8, x comes first, e comes at the end. So x हमारा u होना चाहिए और e हमारा dv over dx होना चाहिए, right? Okay, so this is u and this is dv over dx. I'm going to write down the formula here on the side as well. So we have u into dv over dx. The integral of that is given by uv minus integral of v du over dx over dx. Okay, now let's input values there. Now
we have a negative sign outside, so be careful. That will stay outside, and then you'll have a bracket opened after that. Now you need u into v. What's u? U is just x. V is integral of this thing. That's going to be e raised to power minus half x divided by minus half. Okay? Minus integral of v. What's v again? That's e raised to power minus half x divided by minus 1 over 2 multiplied by du over dx, derivative of u, which is x. x का derivative क्या होगा? 1. इसको हमें integrate करना है. ठीक है? Integration by parts apply होगी. What do we get after this? We have e raised to power minus half x. This 2 that we have in the denominator in the fraction, वो ऊपर आ जाएगा, right? So it becomes minus 2 e raised to power minus half x here. All right. Again, the same thing here. It becomes minus 2e or minus 2x e raised to power minus half x. We can take this constant outside as well. 1 over 2 denominator mein hai. When it comes outside, it becomes 2. We've got this negative sign and this negative sign. We have a plus outside. Plus 2 integral of minus half x with respect to x. Okay? Now we integrate that part. We have minus 2 e raised to power minus half x minus 2x e raised to power minus half x. Yeah, you can at this step or maybe in the next step. It's your choice. And now we integrate this thing. It becomes 2 e raised to power minus half x divided by minus half. Now we simplify this. This is minus 2 e raised to power minus half x plus 2x e raised to power minus half x. Then you've got this negative sign and this positive sign and this negative sign. It becomes plus. नीचे वाला 2 भी ऊपर आ जाएगा. It becomes 4 e raised to power minus half x. That is the integral. अगर आपको सिर्फ integrate करना होता है, you'll put plus c there and that will be it. But now you have limits there and the limits are from 0 to 1. You input those limits. You input the limits from 0 to 1 here. ये आप यहाँ पे input कर देंगे. So we input 1 first. We get minus 2 into e raised to power minus half plus 2 into 1 into e raised to power minus half plus 4e raised to power minus half. That's when you input 1. Then you input 0. Now be careful, it does not become all 0 when you input x equal to 1 here. क्योंकि x जो है वो x equal to 0 input करेंगे पूरा 0 नहीं होगा because x is in the power. It's actually going to become like this, minus 2e raised to power 0 plus 2 into 0. The second term does become 0 because यहाँ पे 0 multiply हो रहा है. E raised to power 0 plus 4e raised to power 0. Now we simplify this, it becomes minus 2e raised to power minus half plus 2e raised to power minus half plus 4e raised to power minus half. And inside here, we've got minus 2 e raised to power 0, 1 hoega, right? Anything raised to power 0 is 1. So we have minus 2 plus 0 plus 4 e raised to power 0. That's also 4. Now we simplify this again. This gets cancelled. And we have 4 e raised to power minus half. Inside we have 2, so minus 2. What did we have to show? That's exactly what we had to show there. 4 e raised to power minus half minus 2. Okay, so it says use integration by parts to show this thing. Let's integrate log of x first. We've done that just a few minutes ago. So I'll do that quickly. ln of x, that becomes 1 into ln of x. And what you do is you treat this as dv over dx. And this is u. You apply integration by parts formula, u into v, that's x into ln of x minus integral of x into 1 over x into dx.
and that gives you x ln x minus x. We've done this integration just now. Now what we do is we input the limits, and limits are 2 to 4. Let's do that. We get 4 ln 4 minus 4 minus 2 ln 2 minus 2. Let's simplify this. That gives us 4 ln 4 minus 4 minus 2 ln 2 plus 2, and that's 4 ln 4 minus 2 ln 2 minus 2. We could leave it here if we were just asked to give an exact value at the end. We could just leave it at this point. But now we have to show something. It says 6 ln 2 minus 2. That's what you have to. What do you have inside the log? Inside the log, that's 2. What do we have here? We have a 4 and a 2. Dono different hai. You can divide it. ln of 4 over 2. This thing. You're saying you can do it ln 4 over 2? Okay, so the quickest way to think about such problems is you only have one log term there. Here you've got 2 log terms. All you do is you make it one single term, and then it'll automatically become what you are basically required to make it. आप इसको सिर्फ एक टर्म बना दो किसी तरह से. Do not worry about कि अंदर क्या आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है. First, try to make it one single term. How would you do that? You have 2 terms that are being subtracted. Yes? Yes, Izza? Yes, you could also do that. So that's also quick. Yes, you're right. So one way to do this would be, you could say this is, somebody else said something from the back. Somebody had their hand raised. Okay. So yeah, so there's one way to think of it like this as well. You could say this is 4 into ln ka 2 square minus 2 ln 2 minus 2. And that gives you 8 ln 2 minus 2 ln 2 minus 2. And that is going to give you 6 ln 2 minus 2. Yeah, so that's pretty quick. So what you could do is, you have ln 2 here, you've got ln 4 here. 4 ko you write as 2 ka square, right? And this 2 then goes outside, gets multiplied by 4, power rule use karke, logs ka. It becomes 8 times ln 2, and then these are the like terms. You just subtract them and you get 6 ln 2 minus 2. Okay, so in this particular case, you could just do it like this quickly. All right. And in a lot of cases, you will see it will not be possible to make to basically make it the same number inside the log. यहाँ पे तो it was pretty quick क्योंकि 4 was 2 square. हमने दोनों के अंदर log के अंदर same number कर दिया, and then you could just subtract them. It's not always going to be like this. So a standard way of thinking about this would be, whatever are the constants outside, you take them to the power. So you have ln 4 raised to power 4 minus ln 2 ka square minus 2. And now you can apply the division rule here. It becomes ln 4 raised to power 4 over 2 square minus 2. Now you can evaluate what you've got inside. So can anyone tell me what this is? Or you can just write it like this as well. You can say this is 2 raised to power 8 divided by 2 raised to power 2 minus 2, and that becomes ln of 2 raised to power 6 minus 2, and then 6 comes outside and becomes 6 ln 2 minus 2, just like before. So a lot of times what will happen is you will not be able to make the numbers inside the same. What you do for that is you apply either division rule or the multiplication rule of logarithms by first writing it like this कि बाहर कोई constant नहीं आ रहा हो, constants को आप पहले power में ले जाओ, and then you apply either the division rule or the multiplication rule. उसके बाद you will eventually get the form.
Okay, would you be able to do the first two parts? उसमें तो मसला नहीं होगा, right? Okay, let's do the third part. Third part, it says use integration by parts to show that the area of the shaded region bounded by the curve, the x-axis, and the line x equals 4 is equal to 8 ln 2 minus 4. So what do we have from the first part? A के coordinates हमारे पास क्या आते हैं? X की value अगर हम यहाँ पे y की 0 input कर दें, x equals 1. So this is 1. We found that here. The first part. All we have to do is we have to integrate this thing. It's the area between the curve and the x-axis. What's the formula for that? Integral of y dx. Right? We've done this in paper 1. Input y is ln x over square root of x. We can write that as, अच्छा, सबसे पहले it's a fraction. Fractions को कैसे integrate करते हैं? We either use logs or we use tan inverse. Does any of them work here? The log rule cannot work here. We cannot make the numerator the derivative of the denominator. वो नहीं कर सकते. Tan inverse doesn't work here because denominator में आपके पास वो वाली form नहीं है, x square plus a square. Both of them do not work. What's the third possibility? Partial fractions. इसकी partial fractions कर सकते हैं. There's only one expression. When all three of them do not work, the fourth option that you think about then is that you make it a product instead. So that's what we do here. We treat it as a product and we write ln of x into x raised to power minus 1 over 2 dx. In this case, it tells you. Generally, fractions में आप देखोगे, अभी तक तो step by step कर रहे हैं. अच्छा, we know कि अभी हम ये वाले questions कर रहे हैं, सब में integration by parts use करना है. Now we're doing these questions and सब में partial fractions use करना है. But integration में जो difficult part है, that's basically this. कि you have to figure out yourself which method to use. So this is generally the thinking process. Fraction हो तो आप वो दो चीजें सोचते हो पहले, or the three things, partial fractions included. If none of them work, you switch to making that fraction a product. And that's what we're doing here. उसने आपको बताया हुआ इस question के अंदर तो integration of parts use करना है. How do we deal with this now? Which one do we take as u and which one do we take as dv over dx? X should be u. Log जो है वो left पे आता है. Remember I late. We have algebraic and log. Log should be u and a should be dv over dx. So this is dv over dx and this is u. Okay, now let's integrate it. I can write the formula here. U dv over dx का integral is uv minus integral of v du over dx. Okay, so u times v, that's ln x, into integral of x raised to power minus 1 over 2. What's that going to be? X raised to power 1 over 2 divided by 1 over 2, right? Increase the power by 1 and divide by that increased power, minus integral of v. What's v again? That's the same thing as before. X raised to power 1 over 2 divided by 1 over 2 multiplied by the derivative of u. ln x का derivative क्या होएगा? 1 over x, and you've got dx there. Now this becomes 2x raised to power 1 over 2 into ln of x outside. Inside the integral now, अच्छा ये 1 over 2 है यहाँ पे, constant को बाहर ले जाते हैं. It becomes 2. What do we have inside? X raised to power 1 over 2 in the numerator, x in the denominator. It becomes x raised to power minus 1 over 2. Right? 1 over 2 minus 1 karenge. You get minus 1 over 2 there. Now this is something that you know how to integrate. X की power increase करते हैं दोबारा 1 से and divide by the increased power, and that's your integral. Okay, what do we do at this point? We input the limits. Limits are from 1 to 4. We input the limits और उसने कहा है
show that the area of the shaded region is equal to 8 ln2 minus 4. That's what you have to show. Input the limits from 1 to 4. So we get 2 into 4 raised to power 1 over 2, yes, square root of 4 into ln of 4 minus 4 into 4 raised to power 1 over 2 minus, when you input 1, you get 2 into 1 raised to power 1 over 2 into ln of 1 minus 4 into 1 raised to power 1 over 2. What does that give you? 2 into 2, that's 4. 4 ln 4 minus 4 into 2, which is 8. Minus 2 into ln 1, that's going to be 0. Minus 4. This becomes 4 ln 4 minus 8 plus 4, which is minus 4. आपके पास ये आ गया 4 ln 4 minus 4. What did you need there? 8 ln 2 minus 4. अंदर ln 2 आना चाहिए. You can write it as 4 ln 2 squared minus 4. That 2 in the power goes outside, gets multiplied by 4 and becomes 8 ln 2 minus 4. तो generally हो जाता है. Okay. X cube into ln of x. X cube into ln of x. उसने सबसे पहले कहा है find the exact coordinates of M. How do you do that? M is the minimum point. Coordinates of M कैसे figure out करेंगे? M is the turning point. M is the turning point. Turning point निकालने के लिए हम क्या करते हैं? We find the derivative. We put that equal to 0. The first part to simply वो करना है. You have the function y equals x cube into log of x. Coordinates of M कैसे आएंगे? dy by dx. We apply the product rule. X cube को as it is रहने दिया. ln x को differentiate कर दिया. That's 1 over x plus derivative of x cube. That's 3x square into ln x as it is. We put this equal to 0. हमारे पास आ गया x square plus 3x square into ln of x. That gives us x square into 1 plus 3 ln x equals 0. Either x square equals 0 or 1 plus 3 ln of x equals 0. ठीक है? So either x equals 0 or ln of x equals minus 1 over 3. log माइनस हो सकता है? log नेगेटिव हो सकता है? log नेगेटिव हो सकता है? सॉरी? हो सकता है. log जो है वो उसका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है. log के अंदर आप नेगेटिव इनपुट नहीं कर सकते. x की जगह नेगेटिव नहीं आ सकता. log की आउटपुट नेगेटिव हो सकती है. So every number between 0 and e और 0 के दरमियान में कोई भी नंबर होगा उसका ln जो है वो नेगेटिव आएगा आपके पास. So anyway you can figure this out कि क्या आता है e raised to power minus 1 over 3. उसने क्या कहा था? exact coordinates of m. x coordinate ये आ गया. ठीक है? ये क्या होता है यहाँ पे e आपकी बेस नहीं है. that goes to the other side becomes the base of minus 1 over 3. x आपके पास आ गया e raised to power minus 1 over 3. दो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं x की 0 या e raised to power minus 1 over 3. m के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? 0 या वो वाला? 0 तो नहीं हो सकता, वो तो ओरिजिन है. ये आपका एक और टर्निंग पॉइंट बन रहा है, वो आप इग्नोर करोगे. इट्स नॉट m. आपके पास दिस इज द वन. अच्छा, ये आपके पास आ गया y equals x cube into ln of x. ओके, इसके अंदर इनपुट कर दें. we get y equals e raised to power minus 1 over 3 whole cube into log of x. ठीक है? And that gives us y equals, sorry, log of x. x की जगह भी वो इनपुट करना था. e raised to power minus 1 over 3. ठीक है? What is it? What does this become? e raised to power minus 1 into minus 1 over 3
ln of e, ln e 1 होता है, so we get y equals minus 1 over 3 e raised to power minus 1, or we can say this is minus 1 over 3 e. That is the y coordinate. x और y coordinate आ गए हमारे पास point m के यहाँ पे. एग्जैक्ट कहा था उसने. मैंने सिर्फ शो किया कि ln e जो है वो 1 है, एंड पे जाके इग्नोर कर दिया. आप उसी पॉइंट पे कर सकते थे, दैट्स फाइन. This is what you get at the end, right? 1 over 3e minus 1 over 3e. So you got minus 1 over 3e here. These are the coordinates of m. Yep, आपको निकालने the first part here. What do we have in the second part? Find the exact area of the shaded region bounded by the curve, the x-axis, and the line x equals 2. क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एक तो आपको करना क्या है, ओवरऑल हमें इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स इनपुट करनी है. दैट्स हाउ यू फाइंड द एरिया. लिमिट्स कैसे इनपुट करेंगे, हमें फिगर आउट करना पड़ेगा ये पॉइंट कौन सा. 2 तो पता है. We have to find the first x intercept. How do we find that? We put the curve equal to 0. You got y equals x cube into ln of x. अगर y को 0 कर दें, what do we get? We get x cube into ln of x. So either x equals 0 or ln x equals 0. यहाँ से आपके पास आ जाएगा x equals e raised to power 0, which is x equals 1 और x equals 0. ये आपके पास एक पॉइंट आ गया. 0 एक तो x इंटरसेप्ट आ रहा है, वो तो हमें पहले से पता था. The second x intercept here, this should be 1. अब आपको पता है लिमिट्स इनपुट करके आपको इंटीग्रेट करके आपको 1 और 2 लिमिट्स इनपुट करनी है उसके. ठीक है. So how do you integrate it now? We've got x cube into ln of x. Part 2 तो हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था. x cube into ln of x. We integrated with limits 1 to 2. Which one of them should we take as u and which one should we take as dv over dx? ln x को u लेना चाहिए क्योंकि उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्टली. This should be dv over dx. And then we just apply the formula. u into v. u क्या है? ln of x. u is ln of x into v. v is x raised to power 4 over 4 minus integral of v. What's v? X raised to power 4 divided by 4 into derivative of ln x. That's 1 over x dx. And now it's something simpler. We get x raised to power 4 ln x 1 over 4 minus 1 over 4 integral of x cube with respect to x. इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. We have 1 over 4 x raised to power 4 ln of x minus 1 over 4 into x raised to power 4 over 4, and that's your integral. इस पे आप लिमिट्स इनपुट कर दें. Input the limits from 1 to 2 and you'll get your result from that. Sorry? Okay, so what do we get? We get 1 over 4 into 2 raised to power 4 into ln of 2 minus 1 over 16 into 2 raised to power 4. This is when you input 2 there, minus 1 over 4 into 1 raised to power 4 into ln of 1. ये तो 0 हो जाएगा. Minus 1 over 16 into 1 raised to power 4. इसको simplify कर लें. ये 16 over 4 है, that's 4 ln 2 minus 1 minus this thing is 0 plus 1 over 16. What did we have to show? Exact area चाहिए था. We can just leave it like this. We can say this is 4 ln 2 minus 1 plus 1 over 16, which is minus 15 over 16, and that's the area that we were looking for. इस तरह भी छोड़ सकते हैं. ln of 16 भी लिख सकते हैं इसको if you want. 4 को power में लेके जाके, and that's the area. How do we integrate this? Again, the first decision here is, it's a सबसे पहले तो directly integrate हो सकता है, नहीं हो सकता.
इट्स अ प्रोडक्ट, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे अप्लाई करेंगे? आपको सबसे पहले चूज करना है which one is u and which one is dv over dx. x should be u and e should be dv over dx. Is that okay? x square is algebraic, वो लेफ्ट पे आ रहा है। e is exponential, वो राइट पे आ रहा है। हमने a को x स्क्वायर को हमने u assume किया और e to power -3x को dv over dx assume किया। Is that okay? Now we will have the formula in front as usual. This is the formula that we have. Okay, so how do we do this? U into v, right? U as it is लिख देंगे, x square. V is the integral of this thing. वो क्या होएगा? E raised to power -3x divided by -3. That's u into v. Okay. Minus integral of v. V is now e raised to power -3x divided by -3. And du over dx, इसका derivative is 2x. Now, even though it's becoming simpler, लेकिन अभी भी आपके पास एक प्रोडक्ट है वहां पे, इसको हमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना पड़ेगा. Sometimes this can also happen that you have to do integration by parts twice. 2 दफा अप्लाई करना पड़ेगा. 2 से ज्यादा नहीं होता. Okay. अच्छा. So what do we get? We have minus x square e raised to power -3x over 3. ये हमारे पास बाहर है. अब अंदर इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है. 1/3 को हम बाहर लिख लेते हैं just to make things a bit simpler. अंदर हमारे पास क्या हो गया? 2 को भी बाहर लिख लेते हैं. Sorry. So we've got 2 outside as well. And inside we've got e raised to power -3x into x. इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है. इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? Yes, so again it's a product. Exactly. So ये फिर से प्रोडक्ट है, फिर से बाय पार्ट्स करना पड़ेगा. अब हम दोबारा से x जो है उसको u लेंगे, इसको हम dv over dx लेंगे बिकॉज ये सिंपल होएगा. दूसरा वाला x जो है वो सिंपल हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, और e raised to power -3x सिंपल नहीं होगा, तो उसको हमने dv over dx रखा और x को u रखा. इस पे दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं. व्हाट डू वी गेट? वी गेट -x square e raised to power -3x divided by 3 प्लस 2/3 हमारे पास बाहर वैसे ही है. अब इस पे दोबारा वो अप्लाई कर दें वो फॉर्मूला. u into v. u क्या है? u is x. v इसका इंटीग्रल, that's e raised to power -3x over -3 minus integral of v. v क्या है? Again, that's e raised to power -3x over 3 into du over dx. And now u is x, so x ka derivative is going to be 1. This is what we get. Is that okay? Any problems? अब इसको सिंप्लीफाई करना है. एक इंटीग्रल आपको रहता है अभी एंड पे, उसको भी इवैल्यूएट कर लेंगे. -x square e raised to power -3x over 3 plus 2/3. ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है अभी भी. We've got -1/3x e raised to power -3x. अब दोबारा से इसका इंटीग्रल क्या होएगा? e raised to power -3x की इंटीग्रेशन होती है 1/3, तो बाहर वैसे ही आ गया. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? e raised to power -3x over -3. And that's your complete integration. अब इसको simplify कर लेंगे. We will get -x square e raised to power -3x divided by 3 minus 2/9 x e raised to power -3x minus, in fact, plus 2/27 e raised to power -3x plus c. That is your integral. ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे.
अभी के लिए सिर्फ जस्ट वन लास्ट थिंग, बहुत सिंपल है वो, दैट्स द इंटेग्रल ऑफ लॉग। डायरेक्टली नहीं होता ना, इसको फाइंड करना पड़ता है ना, log x का इंटेग्रल। हाउ डू यू डू दिस? Zara, how did you think of that? That's a good idea, वैसे वही हम करेंगे यहाँ पे। So ln x का इंटेग्रल कैसे करते हैं? ln x के इंटेग्रल के लिए what we do is we write it as a product. ln x का इंटेग्रल हमें नहीं पता, ठीक है, इसको फाइंड करने का तरीका होता है कि हम इसको एज अ प्रोडक्ट लिख दें, 1 into ln of x, as Zara, I'm not sure how she's figured that out. We get 1 into log of x, ठीक है। अब क्या करें, अब इस पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। हाउ इज दैट गोइंग टू बी एप्लीकेबल? कौन सा u करना चाहिए, कौन सा dv over dx करना चाहिए? Let's look at I8. Log is here, algebraic 1 is like constant, चलो उसको algebraic assume कर लेते हैं। log is on the left side, it should be u. The problem is log को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना डायरेक्टली हमें इसका इंटीग्रल नहीं पता, उसको हम dv over dx सपोज करेंगे तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, फिर उस पर दोबारा इंटीग्रेशन में पार्ट लगाएंगे, that doesn't make any sense, right? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will use this will be dv over dx, this will be u, ठीक है। log x को इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसका एज अ प्रोडक्ट लिख दिया 1 into log of x, and I'm just going to copy that integration by parts formula here as well. This is the formula that we've got. Okay. अब क्या करेंगे, इसको इनपुट कर दें, u times v, u is ln x, v 1 का इंटेग्रल x माइनस इंटेग्रल ऑफ v क्या है, इंटेग्रल ऑफ 1 which is x into derivative of u, that's 1 over x. What do we get? We get x ln x minus integral of 1 dx, and we get x ln x minus x plus c, that is the integration of log of x with x with respect to x. Okay, चले, let's do this. So हम क्या करते हैं, हम इस पे I8 अप्लाई करते हैं, we apply the standard process on this. हमने क्या कहा था, we will look at I8 and see whatever comes is u, whatever comes later is dv over dx. I8 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को u ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल को dv over dx ले लेते हैं। Let's do that. This is u, this is dv over dx, ठीक है। Let's integrate it, let's apply the formula, we'll see which is correct. Okay, इस पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करते हैं, u into v, u क्या है, sin x, what's v, e raised to power x का इंटेग्रल क्या होता है, e raised to power x minus integral of v, what's v again, e raised to power x, sin x का डेरिवेटिव d over dx, that's cos x dx. Okay, now we again have a product. क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करनी पड़ेगी। Now we see again which one do we take as u. So again e raised to power x को हम dv over dx रख लेते हैं, पहले की तरह cos x को u रख लेते हैं। What do we get from this now? We've got sin is u, we need du over dx here, right? u का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव is cos. Okay, अच्छा एक दफा हमने कर लिया, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, sin x
multiplied by e raised to power x minus integral of this thing. इस पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. इसको आपने पूरे को ब्रैकेट के अंदर रख लेना है. u into v. What's u? u is cos of x. Into v, their integral of e raised to power x, which is e raised to power x, minus integral of e raised to power x, which is v, e raised into derivative of cos, which is minus sin x. We got minus sin x here. Okay. So you got sin x into e raised to power x minus cos of x into e raised to power x. You got this minus, and this minus. Overall, हमारे पास minus आ गया यहाँ पे. Integral of e raised to power x sin x dx. And now you've got exactly the same thing that we started from. अब हम क्या करेंगे? Let's say this is something. Let's say this is I. So I equals this. हम क्या कहेंगे? I is equal to sin x into e raised to power x minus cos of x into e raised to power x minus I. So 2i equals this whole thing. And I equals e raised to power x into sin x minus e raised to power x cos x whole divided by 2. That is the integral. It doesn't matter. Doesn't matter. इस case में doesn't matter. Trigonometric और exponential के अंदर there's no clear preference because वो दोनों simplify नहीं होते. You can choose any of them as u as any of them as dv over dx. Doesn't really matter.